Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. We are here back with yet another webinar episode and जिस लास्ट जो हमारा सीजन 3 का फर्स्ट वेबिनार था उसमें हमने आपके साथ जो है ये डिटेल शेयर की थी कि हम हर मंथ में 2 वेबिनार्स लेके आएंगे DSG से रिलेटेड और उसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स और से रिलेटेड वर्किंग जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे. सो फॉर ऑल द पीपल जो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी से हैं, so they know that today 23rd June जो है वो इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है फॉर वुमेन इन इंजीनियरिंग. तो किसी भी मुल्क की अगर तरक्की की बात की जाए तो हमेशा ख़वातीन का किरदार जो है वो उसको बहुत सराहा जाता है और इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज़ किया जाता है कि जहाँ कहीं हमारे मर्द हजरात जो हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए जो है उनकी काम इम्पॉर्टेंट है, तो वहीं आपकी ख़वातीन का किरदार जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है. और वो किसी एक खसूसी फील्ड से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन आपके पास जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं, गवर्नमेंट के हैं, जहाँ पे आपके तरक्की के मौके जो हैं और जो आपकी जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंपनी के अंदर या जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री के अंदर जो है उसका किरदार होता है, तो वहाँ पे ख़वातीन का रोल भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इसी रेफरेंस में आज हम ये ख़ास तौर पे वेबिनार सीरीज़ जो है वो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम वुमेन इंजीनियरिंग को सेलिब्रेट करेंगे. जो चैलेंजेस देखे जाते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन ख़वातीन के लिए जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज़ करती हैं या चूज़ कर चुकी हैं और उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रही हैं, और किस तरह से एक खातून दूसरी खातून की सपोर्ट बन सकती है. सो आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमने 2 ऐसे ही ख़वातीन को जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, जो कि तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा जो है वो उनको हो गया है इंजीनियरिंग की फील्ड में. वो दोनों बज़ाते ख़ुद इंजीनियर्स हैं. सो मैं आपके साथ ज़रूर जो है वो उनका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ. सबसे पहले हमारे पास जो पहली गेस्ट हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सूबिया बेग. She has done her electrical engineering from University of Engineering and Technology. Then she has done her MS and PhD in electronic engineering from GK Institute of Engineering, Science and Technology. Currently, she is serving as Head Energy Research Center, ComSat University. She is Certified Edge Expert for Green Buildings. She is a Certified Trainer of Trainers by NICA. She has been the Vice Chair of IEEE Lahore Section and member of Pakistan Engineering Council's Women Engineering Subcommittee. Currently, she is working in ComSat. And I think, माशाल्लाह, इतने सारे सहरे और एक खातून के और वो भी एक खातून इंजीनियर के उसके ऊपर, तो डेफिनेटली आई थिंक it would be a great honor for us also to have her on board. Assalamu alaikum. डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? आपका माइक म्यूट है, काइंडली अगर आप इसको अनम्यूट कर लें. जी, वालेकुम सलाम नज़ीफ़ा, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग फाइन. आई होप यू आर डूइंग फाइन एज वेल. यस, आई एम गुड. एंड माशाल्लाह जी, आपकी प्रोफाइल जो है उसको देखते हुए और पढ़ते हुए तो एक मोटिवेशन तो मिलती है कि डेफिनेटली हमें भी जो है वो आगे से आगे और उस चीज़ के ऊपर जो है वर्किंग करनी चाहिए. तो थोड़ा सा आप ब्रीफ अप बताएं अपनी जर्नी के बारे में, दैट हाउ इट स्टार्टेड, व्हाई यू ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग, और अब माशाल्लाह आपको इतने साल हो गए हैं. सो हाउ हैज़ बीन द जर्नी? Okay, thank you. I hope this would be a sharing of my experience just to motivate other women engineers and those girls who want to opt for engineering. Thing is that I did engineering a long time ago, and back then और अगर आज भी आप देखें तो we have quite just a bit of slight improvement in the ratio of girl students versus the male students in our classes. So since I am from academia, तो मैंने तो इतने सालों में observe किया कि बहुत ज़्यादा drastic change नहीं आया है, लेकिन it's bit very slow still, and people rather girls are still opting for a medical career as compared to an engineering career, or they're going for other options. But back in our time there wasn't much option. आपको पता है कि उस वक्त ये होता था कि जी आप डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं, तो there's hardly any third option for us. So that's why I opted for engineering, because I wanted to be to have some I've had an interest in mathematics, and plus I had a doctor in my family, and looking at her tough life cycle, I thought being an engineer would be an easier task, but I don't think so, क्योंकि हमने जो बाद में काम किए हैं वो उतने ही टफ थे तकरीबन. बिल्कुल ऐसे. So then FSC के बाद I had this admission done in engineering university, and
आपने यहाँ पे इशू भी लिखा हुआ है. I just want to like to point it over here that starting at the very start when you go in a university and instead of getting motivated, sometimes कुछ लोग ऐसा मिलते हैं, सब नहीं लेकिन a few people who actually start demotivating you. तो एक आध कभी दफा मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, बट इट वाज वेरी स्टार्ट, उसके बाद कभी नहीं हुआ. अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आई वाज वेरी वेरी लकी टू हैव people around me who always motivated me. And after doing my engineering, then I soon got married, and my husband and my family later on, they also had a were a big support in my doing my master's and PhD. And I had two little girls with me. One was just 2 months old when I started my master's, and other one was just barely 3 years old. So with them, within the family, and the master's experience was the toughest one for me, because एक period के बाद मैंने masters किया था. I had a gap in between, although I was doing a job, but still studying after a period was difficult. But still thankful to my family, and मैं यही कहूँगी आपको कि family is the biggest support with you if you बिल्कुल want ऐसे ही है. to go into such a experience. Later on, again, PhD was also not an easy task, and the people around me again were very supportive, including my teachers, my supervisors, my family. So I have been blessed with people who have been Yes. supporting me. But during this whole period, आप कहें कोई milestones आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि people do not want you to progress as much, या आपके male counterparts या आपकी अभी हम बिल्कुल इस पे अभी हम जो है वो आगे हमने बहुत बस सारे वो एक इस क्वेश्चन जो अच्छा. है वो इसी उसके ऊपर कंपाइल किए हुए हैं बिकॉज वी वांट पीपल जो खवातीन खास तौर पे बिकॉज आई एम सॉरी मर्द हजरात जरूर कहेंगे कि आज का सेशन बाइस्ड है बट यस इट इज बिकॉज इट इज वुमेन इन इंजीनियरिंग डे तो हम खास तौर पे खवातीन से रिलेटेड और उनके इशू से रिलेटेड बात करेंगे. सो बिफोर वी Sure. मूव ऑन हमारे पास एक और गेस्ट जो है वो मौजूद हैं. शी इज ऑल्सो अ सिविल इंजीनियर herself. So मैं आपको उनका भी एक brief introduction दे दूं before joining and bringing her live. So हमारे साथ सारा आसिफ हैं. सारा आसिफ has done her civil engineering from UET Lahore, and after that she has done her master's MSc in environmental management of urban land and water from University of Sheffield. So currently she has working on various tasks regarding water source management and integrated water source management such as water policy. She is also an IVLP alumna, and she is also running a platform by the name of Women in STEM, which I think is a very great initiative. So before any delay, I would like to bring her on screen. Welcome, Sarah. Assalamu alaikum. Thank you so much, Nazifa, for having me. And I'm absolutely thrilled to be sharing this screen, this space with Dr. Sobia and you yourself. Nazifa ने हम दोनों का तो बड़ा अच्छा introduction करा दिया. Nazifa खुद भी एक ज़बरदस्त electrical engineer है. She was my batchmate at UET, and Yes. it's extremely ecstatic to see her grow in fields which we have always considered to be male dominant. So Yes. congratulations to both of you for being there, for being role model for women who are just growing and finding their path. एग्जैक्टली. सो हम अपनी जो सेशन है उसका बकायदा एक फॉर्मेट के हिसाब से आगाज करते हैं. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन बैनर कि वुमेन इन इंजीनियरिंग एंड अ डेकेड कंपैरिजन, बिकॉज आई थिंक हम तीनों को, आप डॉक्टर सोबिया को तो माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा, बट मुझे और सारा को तकरीबन एक डेकेड हो गया है इन द इंडस्ट्री सिंस वी आर वर्किंग इन इंजीनियरिंग फील्ड. सो हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस जो है, जैसे सारा ने बताया दैट आई माई सेल्फ आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बिकॉज अब पीपल जो है वो मुझे एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल जरूर जानते हैं बट माई कोर डिग्री इज इंजीनियरिंग. सो आई हैव वर्कड इन कॉमसैट्स. बिल्कुल डॉक्टर सोबिया के जेर साया जो है वो मैंने आगाज किया था करियर का, और फिर उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू डिफरेंट वेंचर्स एंड देन अल्टीमेटली आई एंडेड अप इन अ सोलर इंडस्ट्री. इसी तरह आई हैव सीन सारा की जर्नी भी और डॉक्टर सोबिया की भी. तो अगर सारा आप मुझे बताओ कि अगर आप कंपैरिजन करो that how the women engineering concept was in 2006 or in 2000 millennium और अब जो है क्या difference है? मेरा ख्याल है कि अगर मैं पीछे एक डेकेड पीछे चली जाऊँ तो इंजीनियरिंग में ख़वातीन का जाना वाज काइंड ऑफ लाइक वेरी सरप्राइजिंग एंड एस्टॉनिशिंग. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग इज़ वेरी मेल डोमिनेंट. इंजीनियरिंग तो है ही, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग को सोचो तो ज़हन में आता है अच्छा अब ये मजदूरों वाला काम करेगी. तो बड़े फनी कमेंट्स आते थे. मेरे कजन्स दे यूज्ड टू ब्रिंग वो जो आपकी येलो कैप्स होती हैं कि अब तुम फील्ड में जाओगी तो तुम्हें ये ज़रूरत पड़ेगी. तो उस वक्त मेरे क्लास में, मेरे बैच में 250 total students थे, and to your surprise we were only
12 गर्ल्स, हमसे 12 लड़कियां थीं। और ओवरऑल इंजीनियरिंग के अंदर एक तो आप यूईटी के अंदर लैंड करना और फिर इतने ज़्यादा मेल डोमिनेंट एटमॉस्फेयर में पढ़ना, तो बड़ा एक चैलेंजिंग लगता था उस वक्त। बट अभी डाउन द रोड मुझे ये एंड देन इट वाज वेरी astonishing yet again when I went to England for my masters, कि पाकिस्तान में अभी भी हम बहुत पीछे थे। बाहर इंडिया से माई more than I would say 50% of my class was Chinese girls, and then 30% would be from India, and Pakistan से मैं अकेली लड़की थी जो कि higher degree engineering में pursue करने गई थी. So coming to current point, I think there's a lot of changes, positive changes I must say. I see more very aspiring girls pursuing engineering on their own. ये नहीं है कि जी उनको बनना नहीं था या कोई मेडिकल में नहीं एडमिशन हुआ तो चलो हम इंजीनियरिंग में चले गए. बट आई सी women who are actually thriving and aspiring to be engineers. And what is interesting is that there is like amalgamation of two different degrees now. So you get a core degree in engineering, you acquire knowledge in something else, and then you become the master of two and then excel in that, in those fields Exactly. Very altogether. relevant. Very relevant. So, Dr. Sophia, how can you compare? Because obviously, when you opted for the engineering, so first of all, I would like to ask you that why you didn't become a doctor, though you are now one. But that was a medical doctor. That was something really different. Yes. Well, I had a PhD as well in the family. He was a chemical engineer, so that was my motivation for doing PhD in the very Okay. very early years Nice. of my life. So उनको भाई Okay. को All देख right. के I thought कि जी I should be doing PhD down the line sometimes, and I don't know how I ended up doing it. वेल थिंग इज कि उस वक्त से अब तक जो बहुत बड़ा डिफरेंस जो अभी इन्होंने भी कहा है कि इट्स वेरी वेरी गुड और पॉजिटिव इम्पैक्ट है. पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सेंस दैट girls are opting for their of their own choice. एक बात. Yes. Secondly, then the numbers have increased definitely. कुछ कम मतलब बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते, but still they are increasing. And thirdly, that there is this very large awareness in girls के जी either we go for a career which should they do know about something about engineering. Yeah, इनको Yes. पता है कि कुछ ना कुछ पता है, बहुत डिटेल में शायद ना मालूम हो, but they still know about engineering. And फिर अभी आपको पता है कि more than one area is there. They could go into R&D, they could go into Yes. academia, they could go into industry like you are doing right now. So there are hosts of opportunities open to them. आज Exactly. सुबह जैसे मैंने आपको बताया, I had a master student. She's done her masters today and completed it today. So looking back a few years back, if you see the number of PhD and master students, girl students who were doing that, the number has definitely increased. फिर उनमें एक पैशन है, उनमें जो फोकस करने की एबिलिटी, जो रिसर्च करने की एबिलिटी, डेफिनेटली इट्स I hope the male counterparts don't mind, but it is actually they are able to focus more और डिटेल पे उनका वो होता है focus as compared to the male. ये psychological हमारी नहीं है issue, ये it's there. So thing is कि they have this passion, और once अगर आपको passion का area मिल जाए ना, there is something you are very passionate about, then they बिल्कुल. will definitely excel into it. I had when I joined ComStats back in 2009. I had two master students, and one of them has done very well. She has done her PhD from Korea recently, and she's been working again here back, and she's got very good publications. So दोनों ही ने मुझसे मास्टर्स किया था उस वक्त भी, और उसके बाद so there are host of students who have done masters and they're doing PhD right now with me. थिंग इज कि अब वो ट्रेंड डेफिनेटली बढ़ा है, और दोनों तरफ से इंडस्ट्री भी एकेडमिया भी. आई बिलीव कि जब ये एक वो व्हील टर्निंग शुरू हो गई है ना, इट विल कंटिन्यू होपफुली. एंड थिंग इज अगेन, इफ यू गो बैक टू द अगेन बेसिक्स, दैट with our country and with our sort of industry and with our sort of situation, if we hold back about 50% of the population, we are going to go Yes. nowhere. So that is the Exactly. And I think एक जो acceptance from the society है, also seeing women in these roles and working, I think ये पहले एक बड़ा stereotype होता था that a female cannot go into fields, and obviously आप उनको एक side पे नहीं भेज सकते. अगर इस civil engineering की जैसे सारा ने बात की, so अगर कहीं construction हो रही है, so no one could imagine कि अच्छा यार ये खातून भी खड़ी होकर supervise कर सकती है. So I think times have been changing now.
एंड काफी एक एवोल्यूशन आया है. आई हैव माई सेल्फ डन अ लॉट ऑफ सर्वेज. मतलब मुझे लिटरली लोग ये भी कहते हैं क्या तुम क्या जाओगे छतों को नापोगी, बट आई हैव डन दैट. ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे लोग ही शायद ये स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टीरियोटाइप जो है वो उसको हटा रहे हैं और उसकी वर्किंग कर रहे हैं. सो सारा आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू परस्यू द करियर इन इंजीनियरिंग, एंड जो चैलेंजेस आते हैं जेंडर एसोसिएटेड, उसको किस तरह से ओवरकम आपने किया और कैसे किया जा सकता है? ये बड़ा मजे का सवाल है और इसके ऊपर मैं इतना बोल सकती हूँ कि पूरा दिन गुजर जाएगा, बट आई विल ट्राई टू कंसाइज व्हाटएवर आई हैव टू से. सो आई वाज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड व्हेन आई वाज यंग, और मुझे मैथ्स में मैं बहुत अच्छी थी, फिजिक्स और मैथ्स, और रट्टा मुझसे नहीं लगता था. तो बायो को मैंने 9th ग्रेड में डिसाइड कर लिया था कि ये रट्टा मैं नहीं लगा सकूंगी. हालांकि मुझे अब लगता है कि आई कुड हैव बीन अ वेरी गुड डॉक्टर, लेकिन मैं रट्टा नहीं लगा सकती थी. एंड देन मेरी कजिन जो है वो 98 बैच में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में उनका एडमिशन हुआ, एंड आई हैपेंड टू विजिट यूईटी, एंड आई वाज सो mesmerized by the grandeur of the entire campus. I was like, okay, this is it. This is where I'm going to go and pursue my bachelor's degree of engineering. So वो एक चीज़ था जिसने मेरे अंदर ये inculcate किया, ये शौक डाला. और बनना मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहती थी. That is not at all by choice that I landed into civil engineering. But then when I was becoming a civil engineer, I figured कि ये जो एक general perception है ना कि बस आप construction करेंगे, घर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे और पुल बनाएंगे और बस खत्म हो जाएगा, वो ठेकेदारी और मजदूरी वाला काम है, वो बिल्कुल नहीं है. It is more than that. A civil engineer comprises of all the other disciplines of engineering, be it water, agriculture, irrigation, environment सबसे important है. बहुत सारी debates सुन रहे हैं, climate change, sustainable development. So when we talk about this particular field, इसमें ये सारी चीज़ें incorporate होती हैं. तो बस ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती चली गई. एंड देन फॉर माय हायर डिग्री इन एनवायरनमेंट, आई न्यू इट दैट देयर इज समथिंग which is going to give me a good path if I will choose to go for environmental management. So that is how I landed into environmental management. And as far as the challenges are concerned, there are absolutely many challenges, starting from if you're coming from a like Pakistani household where your parents are concerned that you will choose a manly field, and then how are you going to cope with that? I'm lucky that I come from a family. My father was very supportive. I remember he used to wake up to drop me off at the bus stop, to wait for us at the bus stop. I'm sure you can also remember that. And then he was also very concerned कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई इश्यूज कोई समझने में, किसी से बात करने में. तो ये कॉन्फिडेंस हम दो ही बहनें हैं, हम दो we both of us sisters landed into the UET itself. So हमें घर से ही सिखाया गया था कि you gotta be the man of your life. You can't rely on a man. It's good that you are going to have a man. बहुत सारे लोग सुनेंगे और वो समझेंगे कि मैं फेमिनिस्ट हूँ. मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सेरेब्रल इक्विटी में बिलीव करती हूँ. मुझे लगता है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी है जो कि अकल है, तो आपको आपकी उस अकल की बेसिस के ऊपर कम्पीट करने के लिए सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल होने चाहिए, जैसे कि मर्दों को होते हैं. तो मेरे घर से मेरे वालिद साहब ने यही सिखाया कि यू गॉट टू बी योर ओन मैन. आपको मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया, रास्ता दिखा दिया. You have to be confident in your own skin. Only then you can conquer the world, and it is the survival of the fittest. तो आपको अपने लिए कुछ बनना है, कुछ करना है. And then we all know that a generation learns from a woman itself. आप वो कहते हैं कि अच्छी माएँ दें, आप अच्छी जनरेशन मिलेगी. सो अगर हम खुद ही ये चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकेंगे तो हम आगे किसी को क्या सिखाएंगे. तो वो पहला तो जो स्टेप मैं ओवरकम कर पाई इन सारे चैलेंजेस को, वो घर से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया. दूसरा, when you are at a place, certain place, just आपको ये पता होना चाहिए कि you should know your craft. If you know your craft, then there is no need to be worried about what other people are saying or what other people are doing. You got to cover your ears and keep doing what you're doing. ये अगर हम बात करें कि मर्दों को challenges नहीं आते, I'm sure उनको भी बहुत आते होंगे. We know polling, we know politics, everything. But being a woman, making your mark, I think that all takes a lot of guts. और आपको ignore करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें. And one more important thing, when you are coming out of your home to achieve something, leave your gender at home. मैंने ये सीख लिया कि जेंडर घर छोड़ के आई, मैं अपना जेंडर घर छोड़ के आती हूँ अब. That's what. वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन. अच्छा डॉक्टर सोबिया, आप मुझे बताइएगा कि जो कुछ की स्किल क्वालिटीज, अब जैसे बहुत सारे स्कूल्स में भी हम देख रहे हैं कि स्टेम एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों में अभी से इंकलकेट किया जा रहा है दैट स्टेम इज समथिंग. ये वो फील्ड्स हैं जहां आपको अपना करियर जो है, आपको करियर ग्रोथ की गारंटी मिलती है एंड ऑल. सो कौन से स्किल सेट है और क्वालिटीज हैं जो आप स्टेम इंडस्ट्रीज के अंदर जो है आप देख सकती हैं कि काम आते हैं? Being an engineer, I think, Nazifa,
एक तो होती है ना, I always tell my students that this is something we give you a broad based education, right? But it's up to the student to acquire the skill down the line, those 4 years that they are studying in the university. So Yes, those skills are very important. First, I would say, is the communication skill, without which you cannot excel in any field right now. any field So exactly. without being able to communicate what you think, what's your opinion, what's your take on something, you cannot succeed. So having a good communication skill is the number one skill, I think. Then regarding STEM, then today is the world of digitization. So Yes, we need people who can not only work in one field, but also they can excel in, because we are talking about merger of fields right now. There is a very blur boundary between computer science, computer engineering, electrical engineering. So yes, all the fields are actually, right now I'm working in it, interconnected. so I see a lot of communication, a lot of digitization over here. So the basic skills could be having able to grab some knowledge on, because it's something which everybody is after nowadays, having some knowledge about data science, artificial intelligence, Yes. machine learning. Data analytics is very in nowadays. So you're able to analyze something if you have in front of you. And then communication and digitization. So I would say that these skills, if besides having a degree in a core degree in an area, you need these skills. Otherwise it will be very difficult, or other it will not be an easy job, easy thing to go to a job place or a market venue and excel over there. I think for These a are good career nowadays, there should be a combination of degree and skill. Only skill cannot take you places, only degree cannot take you places. So you Hmm. should know that how you can actually get use of your degree and how Yeah, you can enhance your skills by obviously gaining experience and all. So I think the internship opportunities and there are a number of courses now. I think at our time we hardly had this kind of yeah. an opportunity that we Hmm. could learn on internet or we could even network with people. So I think Absolutely. Now it's very easy. We have YouTube channels, access आपको material available है. हमारे पास तो library होती थी और किताबें होती थी, वो भी exactly. ना I think पुरानी an abundance of knowledge है and अगर आप उसको right way में use कर रहे हैं, use so I think करते आप you can go places and you can do wonders. Sarah, because आप obviously उसमें हो education sector में and then you have a diverse experience, you went to US also. So थोड़ा सा ये बताओ कि companies और organizations की जो support है, ठीक है, एक तो वो कितनी important है and आपको work places के अंदर अगर आप empower करें खवातीन को, तो आपको लगता है कि ये जो ratio अभी आज के दिन में कम है, ये इन नेक्स्ट 5 to 10 years जो है वो ये इंक्रीज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ख़वातीन की जो फिजियोलॉजी है ना, वो बहुत फ़र्क है और उसी हिसाब से जो ख़वातीन के चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ख़वातीन इकोनॉमिकली एम्पावर हो, उसका यही तरीका है कि आप उनको फैसिलिटेट करें। आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी खातून का बच्चा है और वो उस बेचारी उसको घर पे छोड़कर आई हैं, वो काम क्या करेंगी व्हेन the entire time ऑफिस में she's रहेंगे। thinking whether her child has eaten or not. Hmm. So you got to राइट। provide some facility at the workplace where she can go check on her child, and then when she can also focus on the work she's doing. That doesn't make a woman less comparative or less उसको क्या कहेंगे skillful Competitive. as compared to a guy. तो Hmm. आप लेकिन उसके challenges और उसकी constraint ऐसी हैं कि वो बेचारी ने जो काम शायद 6 घंटे का 2 घंटे में करना होगा, उसको वो उसका टाइम स्पेंड बढ़ टाइम जाएगा. की जरूरत So है। definitely at a workplace, you have to have a proper system which is going to help her manage her work task and look after certain issues as well. And then when we also talk about this, then जो आपके पास gender equity और gender biasness है, वो किसी काम की जगह पे नहीं होनी चाहिए. हर बंदे को उसके काम के हिसाब से excel करने का मौका मिलना चाहिए. पहली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि ख़वातीन की जो हरेसमेंट का एक हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इसमें होता ये है कि लोग कमेंट करते हैं बिकॉज आई टीच, आई फील व्हाट हैपेंस. I know how students talk, how I know how colleagues talk, and then you might hear a thing or two, and then it makes you feel bad that you have come out of it. तो मुझे लगता है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो है ना, सोशल ये जेंडर इक्वालिटी का या इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बार बार ट्रेन करना चाहिए आदमियों को. They need to be made compatible working with a woman. कई जगहों पे मैंने देखा है आदमी कंफर्टेबल नहीं होते औरतों के साथ काम करने के लिए, तो वहां यस। पे औरतों को वो बेचारी आ भी जाएंगी, कॉन्फिडेंट भी होंगी, लेकिन उस केस में ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि दे
they may make their environment more inclusive by maybe talking to the other gender, maybe providing them certain kind of trainings where they can see how, or maybe कोई बाहर से कुछ बुलाएं लोगों को जो उनको समझा सकें, वर्कशॉप्स करा सकें, उनको बता सकें कि हाउ व्हाई इज वुमेन एम्पावरमेंट इम्पोर्टेंट. एम्पावरमेंट को यहाँ पे बहुत नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं लोग, तो इसका मतलब ये कि हमें इंक्लूजन चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमिकली वीक टाइम से गुजर रहे हैं. पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग स्टेट एंड पाकिस्तान के जो खवातीन की वर्क फोर्स है ना, दैट्स एक्सेप्शनल, incredibly exceptional and we need to make use of it. चाहे वो आप छोटे, ये तो इंजीनियरिंग की बात है, चाहे वो छोटे कपड़ा बनाने से लेके मेडिकल की बात कर लें, आप आईटी सेक्टर की बात कर लें, हर सेक्टर में तो ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है जिसके अंदर वो एम्पावर कर सकते हैं खवातीन को. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा डॉक्टर सोबिया, इसी क्वेश्चन को आगे लेके जाऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव बीन इन द टीचिंग फील्ड एंड अगेन आपके पास बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स भी आती हैं. सो ये जो इम्प्लिसिट बायसनेसेस होती हैं इंजीनियरिंग करियर के अंदर, एंड अगेन व्हेन स्टूडेंट्स कम टू यू टू ऑब्वियसली आस्क एंड टू फाइंड द मेंटरशिप के हम कौन सी फील्ड में जाएं, फिर हम क्या रूट अपनाएं, तो उनको आप किस तरह से एड्रेस करती हैं और आप इस सारे सिचुएशन को कैसे लेती हैं? Biasness अगर हम कहें कि है नहीं, you're right, it is there. How to address it? There can be two perspectives, that just like Sarah said, on part of the student themselves, on the part of their family, and the part of the environment that we create from them. Thing is कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और I would support it again कि when you come out for such a career, you leave your gender behind. This is the best, I think, tagline for this whole webinar, if we say today, because अगर आप अपने gender को ही consider करते रहेंगे, then you will fall behind and you will not be able to concentrate on what you're going out to achieve it. So thing is कि पहला मेरा तो उनको, जो भी बच्चियां भी या मेरी अपनी faculty members हों या कोई colleagues हों, I would always advise them that you behave as a professional faculty member, you behave as a student who is equal in all senses. You don't consider yourself as a girl student, या आप अपने आप को उस सिनेरियो में ना कंसिडर करें. सबसे पहली बात तो ये है. सेकेंडली, there are biasness, then we try to make the, you can say, environment better for them by काउंसलिंग दैम. देखिए काउंसल तो उनको भी करना चाहिए, दूसरे जेंडर को भी, लेकिन पहले इनको, क्योंकि दे नीड टू बी मोटिवेटेड फर्स्ट. दे नीड मोटिवेशन एंड देन समटाइम्स, मोस्टली आई एम ग्लैड दैट दे डू अंडरस्टैंड एंड दे डू वर्क अराउंड इट, बिकॉज दे हैव चोजन अ फील्ड. जब भी आप चूज करते हैं तो किसी सम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं, एंड मोस्टली not 100%, a few less than 100% छोड़ के बाकी सब अचीव कर लेती हैं. So thing is के we can always work around कि जी हम उनके environment बेहतर करें, और उनको मैं काउंसल सिर्फ इसी तरह ही कर सकती हूँ और करती भी हूँ कि जब भी मेरे पास कोई ऐसा इशू आए कि you prove your merit first and that is the only key that will take you forward. Otherwise आप इधर उधर चीजें जो है ना, you should leave them behind and ignore them. Like Sarah said, ignore most of the things. Exactly. And that's what we can do. सही हो गया. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे बिकॉज सारा इसमें आपका भी एक्सपीरियंस है, डॉक्टर सोबिया आपका भी है, सो नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा कि व्हेन वी ग्रेजुएटेड तो हमारे पास ना इतना एक्सपोजर था, ना इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, बट नाउअडेज वी सी के बहुत सारी वर्चुअल भी और इन पर्सन भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कनेक्शंस होते हैं. लिंक्डइन इज सच अ बिग एंड ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक खवातीन में शायद वो एक इनबिल्ट वर्किंग है. वैसे हम बदनाम होती हैं कि शायद वी डू लॉट ऑफ लेग पुलिंग, या शायद हम जेलसी में आके किसी को सपोर्ट नहीं करते, बट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने इतने अरसे में हमेशा एक खातून को दूसरी खातून की मदद करते हुए ही देखा है. तो इसके बारे में सारा आप अगर तो कुछ हाईलाइट कर दो, कुछ ऐसी नेटवर्किंग प्लेसेस के जहाँ खवातीन जो हैं वो जा सकती हैं, खासतौर पे वो जो इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड हैं, एंड किस तरह से वो इससे फ़ायदा उठा लें. अच्छा, बिल्कुल मैं कर देती हूँ. जो मेरा मकसद था प्लेटफॉर्म बनाने का, वुमेन इन स्टेम, उसका मकसद बिल्कुल यही था कि हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारी मुझे कंप्लेंट सुनने को मिलती थी मेरी स्टूडेंट से या फेलो कॉलीग से कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पे हमसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की जाएँ. कई लड़कों को, जैसे वो अभी पास आउट नहीं हुए होते तो इंटरव्यू की कॉल्स आ जाती हैं या उनके कॉलीग्स बता देते हैं कि
किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई वैकेंसी है, आप अप्लाई कर लो, आप चले जाओ. तो आई थॉट टू माई सेल्फ दैट दिस इज़ वेयर वी कैन हेल्प वुमेन हु आर पर्टिकुलरली इन इंजीनियरिंग फील्ड. क्योंकि जैसे नज़ीफ़ा आपने कहा कि हमारे टाइम पे कोई ऐसा नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. नाउ वी हैव फेसबुक, अब लिंक्डइन है, या आपके पास ट्विटर और इस तरह के और चीज़ें हैं. तो पहली तो चीज़ ये है कि आप डेफिनेटली लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वर्क. You can post your skills over there, you can discuss what are your interests, you can talk about the research area you're having. People definitely reach you out over there. And then the second important thing is that when जो आपके कुछ फेलो फ्रेंड्स हैं या आपके पास, या वर्ड ऑफ माउथ जिसको आप कहते हैं, आप उससे कोशिश करें. यू आस्क पीपल व्हेन यू मीट इन बेशक आप उनको इनफॉर्मल मीटिंग्स में मिल रहे हैं, आप उनको बताएंगे दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. क्योंकि किसी के जहन में कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, एंड देन समथिंग कम्स अप, दे रिमेंबर एंड देन दे कनेक्ट यू विद दैट. सो अगर कोई मुझे सुन रहा है वेबिनार में, तो आई वुड एनकरेज यू टू प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज वुमेन इन स्टेम. हम क्वार्टरली अपने इवेंट्स होल्ड करते हैं जिसके अंदर वी टॉक अबाउट, we bring all the women from or other people from different organizations and from different platforms where we can connect people. And then through that networking opportunity, you talk, you exchange numbers, and then whatever opportunities are out there, you get to find them in one place. That's one way. और I think that is the only way. और इसके अलावा आप कोशिश करेंगे जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार्स होते हैं, you try to attend them, you try to even अगर आप नहीं फुल टाइम के लिए इंगेज हो सकते, तो आप ज़रूर 40 मिनट्स के लिए जाएं. वो नेटवर्किंग सेशंस आपको हेल्प आउट करेंगे टू स्टे कनेक्टेड. Exactly. Dr. Sobia, if you know any of such networking places or platforms, so do mention, please. Well, again, LinkedIn would be my number one, and then if we're talking about a student, the university is the first point of contact for them. क्योंकि अगर वो अपनी स्टूडेंट अपनी ही वेबसाइट और अपनी ही यूनिवर्सिटी और अपने ही जॉब प्लेसमेंट ब्यूरो से भी कनेक्टेड रहे, एंड देन host of opportunity out there in terms of internships and scholarships, I would advise all the students who are looking for a higher education degree that they just Google it, and you will find a host of opportunities out there जो कि आपको without spending any further on your higher education you can get that. अब इस वक्त तो as we just discussed in the beginning that there were no such opportunities at our time, but now you just click and you have a lot to gain from your own exposure through the internet. So ये जो फेसबुक पेजेस हो गए, जैसे मैं तो काफी दफा पोस्ट करती हूँ अपने लिंक्डइन पे. देन वी हैव एन सेंटर जिसको मैं होस्ट कर रही हूँ, हेड कर रही हूँ. वी हैव अ फेसबुक पेज आउट देयर. देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज जिसमें इंटर्नशिप्स हैं. Exactly. I think अब with digitization अब तो इतना आसान हो गया है. In fact अब तो PEC जो है वो itself बहुत ज़्यादा स्टेप लेता है. बहुत सारी ऐसी वर्किंग और पॉलिसीज हैं जो बेहतर हुई हैं. So I think आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, so उतनी ही आपकी जो लर्निंग और वर्किंग है वो ज़्यादा बेहतर होगी. Nazifa, I was on this women engineer committee in PC, I think 2 to 3 years back. 2 years back. Okay. So we encouraged, we went out to talk to girl students in engineering universities. उनको encourage भी किया, उनको बताया भी. PC के अपने पोर्टल पे आप देख रहे हैं कि काफी changes Dr. Sophia, I have a comment to make here. I met DSG के जो chairman थे, उनको किसी, I think इन्होंने कोई expo की थी engineering की उस पे. So he said that the Pakistan women engineering जो PEC के अंदर है, वो तभी काम करती है जब उनके election होते हैं. So that's a very big dilemma that we need to keep it working. We need to hold events where we can have women from all around the Pakistan come on one page and talk about the issues, opportunities, and whatever आप उसको कह सकते हैं, network building, connection and all. That's quite true, क्योंकि मैं भी उसी वक्त थी उस कमेटी पे जब इलेक्शंस होने थे. थिंग इज उसके बाद मैं तो उस कमेटी का पार्ट नहीं रही, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि पीसी इज वर्किंग. there is always room for improvement. तो करना भी है. It has already improved quite a lot. जब हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक मुझे यही पता था कि अच्छा आप पीसी से सिर्फ अपना एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ठीक है. उस टाइम पे जस्ट इतनी वर्किंग थी, लेकिन अब काफी हद तक अब तो इंजीनियर्स के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, उनके इंटर्नशिप्स के लिए भी काफी. I would really like, अगर कोई PEC से हमें सुन रहा है, तो I would really like that they have a proper engineering wing established for women that is dedicated. और उसके अंदर वो हम उनके लिए, खवातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज की भी बात करें और उनके राइट्स की भी बात करें, और कुछ जो एक्स्ट्रा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मैटरनिटी लीव पेड अप्रूव हुई है, तो इस तरह के जो फैसिलिटेशंस हैं ये बहुत जरूरी है.
एग्जैक्टली अच्छा डॉक्टर सोफिया बताइए कि जो इमर्जिंग कुछ ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, कुछ तो ऑब्वियसली आपने पहले भी मेंशन की, लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इनटू R&D अ लॉट एंड आप ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट MS स्टूडेंट्स आते हैं और हर रिसर्च आई थिंक एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। तो आप कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज बताइए जिसको एग्जिस्टिंग इंजीनियर्स को भी फॉलो करना चाहिए, न्यू इंजीनियर्स के लिए तो ऑब्वियसली इट इज अ लर्निंग ऑल दिस। well I would be again repeating myself, लेकिन बात ये है कि again मेरी opinion में तो AI, machine learning and digitization, डेटा that's साइंस the आपने future, मेंशन that's किया the था। future and if you're any field, कोई भी R&D field हो, आप अगर इसमें excel कर सकते हैं या even अपनी beginner knowledge ले लें और फिर with time you improve that knowledge, then this can be a great help for you. Thing is कि जी आप अपनी फील्ड में ही रहें, कोई इशू नहीं है, लेकिन एनर्जी, क्योंकि मैंने एनर्जी में काम किया पिछले कुछ सालों में, तो there's a lot of room to work over here, as you would also know. आप तो काम कर रही हैं फील्ड के अंदर, कि क्योंकि ये एक ग्रोइंग फील्ड है, it's a critical area that the issues are quite critical and they need to be addressed. So there is a huge एग्जैक्टली। vacuum of HR over there. ह्यूमन ठीक। रिसोर्स कम है और स्पेशलाइज्ड फील्ड कम है और स्किल्स कम है लोगों के अंदर. वी डू ठीक। नॉट हैव दैट मच HR और ट्रेन्ड और स्किल्ड जो हमें चाहिए इस वक्त एनर्जी के अंदर. तो एनर्जी इज वन फील्ड के, क्योंकि जहाँ पे आपको मल्टीडिसिप्लिनरी है, आइदर एग्जैक्ट केमिकल आइदर इलेक्ट्रिकल, और अगर उसके साथ आप एक और एग्जैक्टली बात जुड़ गई है जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट एनवायरमेंट है, है, लाइक बिल्कुल। सारा इज वर्किंग इन इट. आई थिंक सो अभी ये साल जो है ये वैसे ही बहुत प्रोमिनेंट रहा है टू फील एक्चुअली कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हमने इतना अब्रप्ट चेंज देखा है टेम्परेचर्स का एंड एवरीथिंग, जी बड़ी फनी बात की है नजीफा ने, मैं सारा दिन लोगों को समझाती हूँ क्लाइमेट चेंज इज वेरी रियल, वेरी रियल. गर्मी इस दफा तो इट इज हैपनिंग ना दिस ईयर, तो आई थिंक लोगों ने अब तो खुद एक्सपीरियंस भी कर लिया. ये वैसे ही है ना कि आप एक चीज, वो शेर आया बट जब तक हाँ, शेर शेर आता वाकई नहीं आ तो गया है. लोगों को जो है वो नहीं आता. सारा अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी वर्किंग है एनवायरमेंटल से रिलेटेड, तो उसके अंदर कोई इमर्जिंग ट्रेंड टेक्नोलॉजीज जो आपको लगता है कि इंजीनियर्स को फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए. जैसे अभी डॉक्टर सोबिया ने कहा, आई थिंक AI एंड रोबोटिक्स इट इज़ द फ्यूचर, और हम इसको हर फील्ड के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. अभी कल ही वी हैड अ टॉक विद सस्टेनेबिलिटी मैनेजर ऑफ US कॉन्सुलेट, तो वो भी यही बात कर रहे थे. यू शुड हैव इन लाइक इन्फ्यूजन ऑफ द बोथ. यू कैन टॉक अबाउट क्रॉप वाटर मैनेजमेंट, एक क्रॉप कितना पानी ले रहा है उसको सेंसर्स के थ्रू मेजर करना, डाटा को मोर प्रिसाइज करना. हमारे पास जो डाटा है ना वो बहुत स्कैटर्ड है और बिल्कुल रिलायबल नहीं है. हम अभी भी वो किताबी टेलीफोन करते हैं, आप उनको जगहों पे और पूछते हैं कि कितना डिस्चार्ज था, स्टेज कितनी थी और उसके अगेंस्ट आपके पास बारिश कितनी हुई, और वही आप हाथों से कैलकुलेशंस करें, विच इज़ वेरी सैड. एंड इफ यू लुक एट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, दे हैव डेवलप्ड ड्रोन्स एंड दे हैव डेवलप्ड द नेक्स्ट लेवल डाटा एनालिटिक्स और जबरदस्त पाइथन और लैंग्वेज पे चले गए हैं. हमने कभी सोचा नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ते हुए कि वी विल बी एबल टू डू कोडिंग, और कोडिंग के थ्रू हम अपने सिनारियोज डेवलप करेंगे और फिर हम क्लाइमेट चेंज और जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे काम है उन पे चलेंगे. तो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स. आप अगर सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो यू शुड be able to learn about all the computer languages. You should know how to develop codes. You should know how to do the programming. Artificial intelligence, absolutely. It's very prudent for survival in the coming years. And then I think climate change and sustainable development. ये सारी चीज़ें आप अपने तौर पे rely नहीं कर सकते. With the help of this new technology of artificial intelligence and coding and programming, आप predictions कर सकते हैं फॉर एज लॉन्ग एज 50 years ahead, जो कि बाकी सारे जो आपके हमारे करंट सॉफ्टवेयर हैं वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है. तो आई थिंक दिस इज इट. आई थिंक एक क्वेश्चन जी If I जरूर would सर. like to add one thing is IoT. एक तो IoT, एक फोर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो IoT is something, जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि you have to call and then you get the data. So if you have a good sensor network available और आप sensors deploy करें और sensors का data आप collect करें, तो Internet of Things is the next big thing. And then fourth industrial revolution is there. So these are again two more keywords. बिल्कुल. अच्छा, जहाँ हमने बीच में कहीं ना कहीं तो इस हवाले से ज़रूर बात की, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस फॉर अ फीमेल जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज हमने हमेशा जो अपने प्रीवियस जनरेशंस में देखा, बिकॉज जो फादर्स हैं वो घर से अगर जाते हैं तो वो रात देर तक आते हैं, और अगर हमारी माएँ जो हैं वो जॉब कर भी रही थी, बिकॉज माई मदर ऑल्सो वॉज अ वर्किंग वुमेन, बट वो
हमारे स्कूल से आने से पहले घर पे होती थी. सो आई थिंक ये जो एक चेंज है ऑफ फीमेल्स जॉइनिंग कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड फॉलोइंग दैट 9 to 6 टाइमिंग्स, एंड अगेन अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी इन्वॉल्व सो मच. सो क्रिएटिंग अ वर्क लाइफ बैलेंस आई थिंक एक चैलेंज एक खातून के लिए ज्यादा है बनस्पत एक जो है वो मर्द हजरात के लिए, बीइंग अ फादर और बीइंग अ ब्रदर और बीइंग अ हस्बैंड. सो एक तो इसको, इस जो डायलेमा है इसको हमें कैसे चेंज करना चाहिए, बिकॉज इन अब्रॉड वी सी के अगर वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो जेंडर इक्वालिटी हर सेगमेंट में है. बी इट हाउस कोर्स, बी इट अपब्रिंगिंग ऑफ किड्स, बी इट जॉब, बी इट लाइक हैविंग एनी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द फैमिली एंड एवरीथिंग. बट यहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी तो प्रोवाइड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ जब आप करियर ग्रोथ की बात करें या आप जॉब करने की इजाजत देना या जॉब करने की एक आपको आज़ादी है. लेकिन जहाँ कहीं आपके पास जब वो हाउस कोर्स या वो चीज़ें आती हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देन एंड देयर वही है. ठीक है. सो आई वुड लाइक कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे एक तो वर्क लाइफ बैलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बेहतर कर सकते हैं, और ये जो एक हमारी टिपिकल सोच है इसको हम बेहतर कर सकते हैं कि हम क्यों ये डिवाइड नहीं कर पाते टास्क. सो डॉक्टर सोफिया, आपसे पहले जो है वो मैं Well, again, ये तो चीज नजीफा, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ये विद टाइम चेंजेस आएंगी, कुछ आ गई हैं लेकिन इट विल टेक अगेन मोर टाइम. वही बात है कि आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी थिंकिंग, आपकी जो फ्रॉम चाइल्डहुड टुवर्ड्स टिल यू गेट ग्रोन अप, if that is that those ideas are inculcated at that time, कि जी बेटा अगर आप बेटे हैं तो नहीं आपने यहीं बैठे रहना है, आपके पास चाय भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, लेकिन बच्ची ने जाके किचन में काम करना है. लेकिन बात ये है कि देखें, वो बात सही है, इफ यू वांट टू इक्वलाइज वर्क, तो फिर जाहिर बात है आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ ना कुछ लेनी चाहिए. थिंग इज कि हमारा जो अपना रोल है वो वी नीड टू प्रायोरिटाइज. जो अभी सिचुएशन है, अब ये तो नहीं होता कि ओवरनाइट एक सोशल चेंज इतना बड़ा आ जाए. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो थिंग इज कि अगर हमने इसको किस तरह डील करना है, वुड बी टू वी प्रायोरिटाइज आवर टाइम, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एट द एंड ऑफ द डे आप कह लीजिए कि इट्स अ कंटिन्यूअस बैटल. इट्स नॉट एन इजी टास्क. किसी से अगर आप खुद भी अपनी लाइफ में देख रही होंगी, आप किसी से भी पूछ लें विद वर्किंग ऑफ 9 to 6, या इवन हमारे यहाँ तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, तो यू हैव योर मोर रोल्स, and you're occupied even on weekends, you're occupied even at night time. आपको emails भी चेक करनी है, आपको शायद instructions भी देनी है, शायद आपको और काम भी करने हैं, और साथ साथ फिर आपको ये घर के देखने हैं. थिंग इज कि ये तो टाइम से ही ठीक होगा. अवेयरनेस क्रिएट करना मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी है एट दिस टाइम. इफ वी आर एबल टू क्रिएट अवेयरनेस, अगेन एक सटल सा चेंज है जो कोई सुन ले, शायद वो थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाए, एंड दिस वुड गो अ लॉन्ग वे. So this is going to take time, but we need to make our own efforts in this way. Exactly. जी सारा, what you have to say about this? मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल डॉक्टर सोबिया से एग्री करूंगी. द चेंज हैज टू कम फ्रॉम एवरी होम एंड एवरी हाउस होल्ड. हम बात जितनी मर्जी करते रहें, जब तक हम अपने बच्चों को, खासतौर पर लड़कों को, ये नहीं सिखाएंगे ना कि इट्स अ टीम वर्क, उसके बगैर हम नहीं कुछ कर सकते. ये आई थिंक ये जो हमारा कल्चर है ना, थोड़ा सा हम इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है कि आदमी काम नहीं करेंगे. अगर हम अपने रिलीजन को उठा के देखें ना, तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते भी खुद बना लेते थे, व्हिच इज नॉट अ बिग डील. तो ये लर्निंग है. इस्लाम हर चीज़ में अप्लाई होना चाहिए. ख़वातीन को एम्पावर तो इस्लाम खुद करता है. जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो मैं तो वेस्ट के फेमिनिज्म को मानती ही नहीं. मैं कहती हूँ कि इस्लाम ने औरत को जो है वो डे वन से एम्पावर किया है, सबसे ज्यादा राइट्स दिए, एम्पावरमेंट दिए. हज़रत खदीजा यूज्ड टू डू ट्रेडिंग एंड हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हर कंपेनियन इन दैट. तो वहां से हम ये उठा लें तो कंपेनियनशिप है ना. मजहब भी यही कहते हैं कि आदमी और औरत एक दूसरे का लिबास है. तो यानी कि आपको घर से अपने हस्बैंड को, आप जो खातून घर से निकल रही है वो आपको भी तो घर में चेंज अच्छा लेकर आ रही है ना. शी इज ब्रिंगिंग सम गुड थिंग्स टू योर होम, शी इज अपब्रिंगिंग योर चाइल्ड, शी इज नॉट डूइंग इट ऑन फॉर हर ओन सेल्फ. तो ये घर से करना कि एक खातून अगर काम पे गई है तो घर में आके उसने रोटी बनानी है, ये उसी का काम है, बर्तन धोने उसी का काम है. आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग नोशन. ये मिलके होता है, टीम वर्क है, और करना भी ऐसे ही चाहिए. मैं तो चौके पे मेरी शादी नहीं हुई, बट आई हैव एन एग्जांपल ऑफ माय फादर. हमारे घर में जब कोई बहुत डिनर्स होते हैं और मेड अवेलेबल नहीं होती तो वो बर्तन धोते हैं. हमने कभी नहीं देखा. इवन मुझे याद है हमारे पेपर होते थे, वो हमें कहते थे बेटे तुम पढ़ो, I'll help your mother, and he still does it. So मैंने नहीं देखा कि उन्होंने इसमें उनकी कोई
उनकी शान में कोई कमी हो गई है या उनकी कोई रिस्पेक्ट में कमी हो गई है, the respect and dignity is there. You are sharing a burden with your co-partner, which is not a big deal. अगर वो आपके काम कर सकती हैं, आपके लिए गाड़ी चला रही हैं, आपके लिए बाहर जा रही हैं, खाना बना रही हैं, तो आप इतना सा कंफर्ट उन्हें दे सकते हैं. तो ये घर से होगा. और दूसरी बात ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज करना वाकई बहुत मुश्किल है. आपको घर पे भी टाइम देना है, पेरेंट्स को भी टाइम देना है और जॉब को भी देना है. तो चैलेंजेस तो हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क के थ्रू ही ओवरकम कर सकते हैं. कंपैशन मैं उसको कहूँगी कि प्लीज हैव अ लिटिल कंपैशन फॉर ईच अदर, ओनली देन यू कैन गो थ्रू विद इट. Exactly, very well said. अच्छा, हमारे साथ पूरे लाइव सेशन के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस आते रहे एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑलरेडी आंसर्ड बाय यू ऑल. सो थोड़े बहुत मैं पॉप अप कर दूंगी. एंड डॉक्टर सोबिया के बहुत ज़्यादा फैन है भाई माशाल्लाह, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने जो है वो डॉक्टर सोबिया को ट्रैक करके उसकी वर्किंग भी की है. सो ये लाइव कमेंट्स जो है ये हमारे सेशन के बाद उसके नीचे जो है वो डेफिनेटली शो भी हो रहे होंगे. बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट चूंकि सारे एड्रेस हो गए, तो इसलिए मैंने पर्टिकुलरली लिए नहीं. सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. इट वाज a very great discussion with you both, and इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर किसी इसी तरह की वर्किंग में किसी इन पर्सन इवेंट के अंदर भी डेफिनेटली विल हैव अ वर्किंग, और हम जरूर एक प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे. इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट वी कैन एंड वी विल एंड वी हैव बीन डूइंग. सो आई थिंक आपके सामने ये दो रोल मॉडल्स हैं फ्रॉम द इंजीनियरिंग फील्ड, जो कि इतनी अच्छी तरह से अपना करियर परसू कर रही हैं, अपनी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस कर रही हैं. तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ वर्किंग है जहां आप डेफिनेटली हर किस्म की वर्किंग जो है वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपना करियर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. लास्ट एडवाइस, एक एडवाइस आप दोनों की तरफ से खवातीन इंजीनियर्स के लिए, और उसके बाद फिर हम अपना सेशन रैप अप करेंगे. जी डॉक्टर सुबिया, पहले आपसे. Thank you Nazifa for having us and thank you for this opportunity. I am sure ये चीजें होती रहती हैं, लेकिन again it can be an additional effort in what's been happening so far. Or I again like to thank you and Sarah as well for coming into this forum. Last piece, or the first piece of advice I always give is for any women engineer would be to be professional. Bas. Be professional. Do not take into consider that you're a woman or your gender को छोड़ के आप अपने प्रोफेशन पे टाइम देंगे, you will definitely excel. ये जो चीजें ना कि आपको harassment होगी या लोग आपको undermine कर जाएंगे, thing is that this will all will be left behind if you remain professional and you remain committed to what you came out to do. So that's it. Thank you. जी सारा. Absolutely, I would agree with Dr. Sobia. Like I said earlier in the conversation, leave your gender behind and believe in yourself. ये दो चीजें, आप जब अपना जेंडर घर छोड़ेंगे तो you will be professional. आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, और आपको अपनी क्राफ्ट का पता है. And believe in yourself. No matter how much somebody is making fun of you on your crazy ideas, how much somebody is trying to demean you, forget about it. अपने फोकस रखें और बस चलते चले जाएं. You will be there, inshallah, wherever you want to be. Inshallah. Thank you so much both of you and for your time. Inshallah हम फिर कभी इसी तरह की सेशन के अंदर किसी वर्किंग में जो है मिलेंगे. Thank you जी. जी, तो इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है. एंड जैसे इन दोनों ने अपनी एडवाइस दी दैट यू हैव टू कीप योर जेंडर असाइड इफ़ यू वांट टू एक्सेल. जस्ट बी कंसिस्टेंट, just put all of your efforts as you can, and inshallah one day you will be up in somewhere in some good company in your career and everything. Inshallah next time आपके साथ इसी तरह का कोई और एक सेशन लेके, एक और टॉपिक लेके हम आएंगे. You can always comment कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम डिस्कशंस करें या हम मेंटोर्स लेके आएं. So definitely we'll follow that. Until then, Allah Hafiz.